हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब मजे में हो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एज वेल, बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल द लिविंग एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन, लाइक इन कंप्लीट डिटेल्स कि मैंने कितना खर्चा किया व्हाइल आई वाज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन। आई वाज इन बॉस्टन फ्रॉम September 2016 all the way till December 2018. I did a lot of research, extracted all that information for you guys, and this video will be very valuable to you if you're coming here for masters and you're trying to plan कि आपका next 2-3 years में कितना खर्चा होने वाला है अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो. It would also be very valuable for parents who are trying to send their kids to America for higher studies, क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि यार नेक्स्ट 2-3 साल में बच्चे को कितना पैसा लगेगा ये पूरा मास्टर्स का जर्नी कंप्लीट करने के लिए. जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यूजुअली ये वीडियोस बनाता हूँ जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ सुबह सुबह, बट आज तो है संडे और ऑफिस नहीं जाना है, बट हम बाहर निकले हैं क्योंकि वेदर बहुत ही औसम था और सोचा कि यार इतना बढ़िया मौसम हुआ है, इतने दिनों के बाद बाहर निकलते हैं, थोड़ा कुछ घूम के खा पे के आते हैं और बहुत सारा हमें ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है तो वो सब कर लेंगे. और ये वीडियो का टॉपिक मेरे माइंड में बहुत टाइम से था एंड आई हैड टू डू इट. सो टुडे व्हाइल ऑन दिस जर्नी विल टॉक अबाउट ऑल दोस डिटेल्स एंड आई ऑल्सो हैव मंजरी हियर. शी इज going to be driving me around and showing me things. So I have help today. मैं आज अकेला नहीं हूँ. Just to let you guys know कि इस वीडियो की प्रिपरेशन में मैंने मेरे सारे डिटेल्ड स्टेटमेंट्स और मेरे पेमेंट्स और मेरे फीस का सब पूरा एक इवैल्यूएशन किया और वो जो मतलब पूरा ओवरऑल जो नंबर आया वो देख के मैं खुद शॉक हो गया था. So please stay on your seats. Do not turn off your screen or go and watch another video. ये पूरा वीडियो खत्म करके जाओ. आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत शौक तो लगेगा ही. If you're watching my video for the first time, please consider subscribing because I make videos about life in America and like my experience while doing masters and all those things. तो आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो सकता है अगर आप मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो या फिर आप अमेरिका आ रहे हो घूमने के लिए इन जनरल. You can also hit me up on Instagram. My Instagram ID is same as my YouTube ID, which is Travel Nonstop with Vivek. And if you have any questions, you can directly message me there and I try to answer as much as I can. So without wasting any time, let's get started and dive into the numbers and see how much I actually spent. For the sake of simplicity, I'm going to keep all the numbers that I mentioned in this video in dollars, and in the end, I'm going to do a final conversion जहाँ पे आपको शॉक लगेगा थोड़ा सा. Also, I want to tell you guys कि मैंने मेरा काफी रिसर्च किया है मेरे finances में और देखा है कि मैंने क्या क्या खर्चे किए हैं, तो सारे मैंने notes बनाए हैं, तो I'm going to refer to these notes and then tell you guys the exact values and the numbers or the expenses that I've done. सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा I-20 फॉर्म जो मुझे नॉर्थ ईस्टर्न से आया था in 2016. I-20 is a document that you get from your college when you are given an admission. And then this is a document that you take to your visa officer, and that's when you ask your visa officer to give you a visa for studies in America. This is the I-20 that I have with me. Within this document there is a very important category that is mentioned, which is called financials. और financial में basically college देता है एक estimate वैल्यू कि अगर आप अमेरिका में आके पढ़ाई करोगे तो एक साल में आपको ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आएगा. इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इन माय I-20, you can see that the college has said for tuition and fees you will probably spend $24,430, and for living expenses you will be spending $17,784. Now this is again just an estimate, not the real numbers, and if you are living frugal then you can save a lot of money on your living expenses, but this is a good ballpark number that you can start with if you are planning your expenses, if you're planning for finances. And this is the number that your visa officer is also looking for when you go for your visa interview. The visa officer is expecting that you have this much amount of liquid assets or liquid money lying in your account. And on the basis of that, the visa officer will basically determine if you should be given a US visa or F1 visa for studies in America. So my total amount here mentioned in the I-20 from the college was basically $42,214 back in 2016. This number will again probably change for you if you are getting an admit now, because due to inflation, the cost of living has increased significantly. Even cost of tuition has gone up. So let's start with tuition, which is going to be the biggest expense that you pay directly to college. The amount of fees that you pay per semester will depend upon the number of credits you take. So for me, for example, if I took one course which was equivalent to 4 credits, then I had to pay for 4 credits. And the cost per credit can be found out on the college website. So if you go to Northeastern University's website, you can see that right now the cost for
one credit is $1,625. But back in 2016, when I was taking admission, the cost per credit was $1,450. In order to maintain my student status, I had to take a minimum of 8 credits per semester, which was mandatory. And over the course of my entire master's for 2.5 years, I took total 33 credits. You required 32 credits to graduate from Northeastern University with a master's degree. I had to take one more credit, which was a compulsory course, which was a co-op course, and we'll talk about that in future videos. But I had to take it, and it was compulsory for all the international students who were trying to do masters from Northeastern. So for a total of 33 credits, if you multiply that with the cost per credit, which is $1,450, the total that I ended up paying in the span of 2.5 years was $47,850. Apart from this tuition fee, which is the maximum expense, I also paid $70 per year as recreational fees, which was fees to access the gym and other play areas where students could go and play games. So for 2 years, I paid $140. There was also a one-time fee for international students for $250, which I had to pay before I could start attending the college, which was like an administration fee and all that stuff. So the total cost of tuition that I ended up paying for 2.5 years to Northeastern University only was $48,240, which was like a huge amount. This is just the fixed cost of doing my master's and doing all these courses from Northeastern. This number will increase a little bit for you. It may not be very much, but do expect a little bit of increase because of recession and the increase in the course fees and all those things. Had to grab a cup of coffee क्योंकि प्यास लग गई थी, और आपको तो पता है कि मुझे कॉफी कितनी पसंद है. पानी से हमारा काम नहीं चलता है. ट्यूशन फी जो आप पे करते हो वो डायरेक्टली कॉलेज को जाती है, एंड दैट इज लाइक अ फिक्स्ड एक्सपेंस दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी डूइंग मास्टर्स विद यू विल हैव टू पे. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपेंस होता है वो होता है हमारा रेंट. राइट, अगर आपको मास्टर्स करना है, डेफिनेटली you'll have to find an apartment where you can live. You will basically be paying rent for it for the entire duration of your masters. Again, this is your variable expenses. हर स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू अलग होगी, क्योंकि लोग अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वो लोग रहने की कोशिश करेंगे. इफ योर बजट इज मोर, देन यू कैन गेट योर ओन रूम एंड देन यू कैन लिव इंडिपेंडेंटली. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू शेयर्ड अकोमोडेशन like I did. So I was basically sharing my room with another roommate. That is the reason my rent was a little low. So if I talk about myself, I paid about $600 per month and in rent for about 30 months, which is the entire duration of my masters. So if I multiply 600 with 30, that's equal to $18,000 for the entire duration of my masters. After rent, you have to pay for your phone bill. Phone bill for me costed about $30 per month, and for 2.5 years, that's equal to around $900. Phone bill for me was a little expensive, but you could get a cheaper plan with less data, and then you could probably go around $15 or $20. Maybe आपका काम चल जाएगा. I was paying $30, which is like above average. उसके बाद internet and Wi-Fi is something that you definitely need. You'll be doing a lot of your assignments from home. You will be doing research on the internet, so you cannot be without Wi-Fi. So remember, it was 5 of us living together in an apartment. Wi-Fi bill was approximately $100 per month. So if you split that per person, it was approximately $20 for me. If you multiply that with 30 months, which is 2.5 years in total, that is approximately $600. इसके बाद आता है आपका heat, hot water and electricity. अगर आप बॉस्टन में रह रहे हो जहाँ पे 6 से 7 महीने की कड़क ठंडी पड़ती है, तो अगर आपके पास heat and hot water नहीं हुआ तो आपकी कुल्फी जम जाएगी. Basically, without that you cannot survive. So for that I was paying approximately $30 per month, and if you multiply that with 2.5 years, it's approximately $900 for the entire duration of my masters. तो ये तो हो गए हमारे फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस जिसके बारे में मुझे आइडिया है. इसके बाद आते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो बहुत ही वेरिएबल हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है हर महीने का. इट कुड हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आई एम डूइंग. सो दोज आर एक्सपेंसेस दैट आई पे टुवर्ड्स माय ग्रोसरी, माय ट्रैवल, माय फूड, माय वेकेशन, माय पार्टीज और व्हाटएवर दैट यू माइट डू. तो इन सारे एक्सपेंसेस का अगर मैं एवरेज करूं, व्हेन आई वेंट थ्रू all my statements, I find that it is approximately $700 to $800. So let's keep it on the higher side, and I will mark it as $800 per month of miscellaneous expenses. And if I multiply that with 2.5 years, I paid approximately $24,000 in this type of expense. Now, if I add all these expenses, it costed me approximately $1,480 per month. And if you multiply that with 2.5 years, the total amount that I get is $44,400
for the entire duration of my masters. The total money that I paid in tuition is approximately $48,240, and the money that I spent in my living expenses is approximately $44,400. Now, if I add these two amounts, drum rolls please, the total money that I paid for my entire masters for 2.5 years is approximately $92,640. If you round that off, it's like $1 lakh. This is a huge amount, and when I saw these statistics when I was doing this research, सच में मेरी भी फट गई और मुझे लगा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया. Now, if you convert this in rupees, it's approximately 76,89,078 इंडियन रुपीस. ये जो इंडियन रुपीस का कन्वर्जन रेट जो मैंने लगाया है वो अभी का रेट लगा हुआ है. 2018 के एंड में ये रेट थोड़ा कम था, तो थोड़ा और कम होगा अमाउंट इन रुपीस, बट यू गेट द जनरल आइडिया राइट, कितना खर्चा हुआ है. 76,89,000, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया. ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है काफी शॉकिंग है एंड काफी ज्यादा अमाउंट है. डेफिनेटली मेरी भी काफी फट गई थी जब मैंने ये अमाउंट देखा, जब मैंने रिसर्च किया एंड आई फिगर्ड आउट कि यार इतना ज्यादा खर्चा हो गया 2.5 साल में. बट सच में डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक मेरे अर्निंग्स को इंक्लूड नहीं किया है. While I was on campus, I was doing part-time job. I was a teacher's assistant for 1 semester, and then I also got 2 internships, one in Boston, one in New York. तो वहाँ से मुझे पैसे आए थे, and I used a lot of that money to pay for my tuition and to pay for my living expenses. तो ओवरऑल पैसा जो मैंने मेरे पेरेंट्स से लिया और जो मैंने लोन के थ्रू लिया to support my masters was much less than what you see here, and I will also make a video on it where I will show the amount of money that I made living on campus, जिससे मेरा ये जो total cost है ये काफी कम हो गया. बट आपको एक जनरल आइडिया लग रहा होगा ये मेरे एक्सपेंसेस को देख के कि कितना खर्चा आता है. इन द एक्सप्लेनेशन दैट आई गिव यू, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो पुट देम इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम. आई रियली विश कि आप लोग अपने मास्टर्स के जर्नी में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो, वेदर इट्स इन अमेरिका और एनी अदर कॉलेज. गो फॉर फर्दर स्टडीज एंड एनहांस योर स्किल्स एंड देन फुलफिल योर ड्रीम्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.